Hi, in today's video, we are going to be practicing a simple yoga routine to improve your prostrate health that you can do lying on the bed or on the floor. This is something that every man over 50 years must practice every day. Definitely you can do it even if you're younger than that. आज का अभ्यास में हम ऐसा एक सरल योग अभ्यास करेंगे जिसको आप बेड में लेट के या फ्लोर में लेट के कर सकते हैं आपका प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा करने के लिए। जो भी पुरुष लोग जिनका उम्र 50 से ज़्यादा है आप इसको रोज अभ्यास करिए। 50 उम्र के नीचे भी है आप ज़रूर कर सकते हैं अपना प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। Before we begin the practice, make sure to subscribe to this channel and press the bell icon so that every time I upload a new video, you come to know about it and it also motivates me to make more such videos for all of you. शुरू करने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आराम से लेट जाएं, let's lie down. Close your eyes and let your body relax. शरीर को विश्राम होने दीजिए. First, let's turn to our right side. धीरे धीरे दाईं तरफ करवट लीजिए. And if you wish to, you may rest your head with your hand. सिर को हाथ से सपोर्ट दीजिए. First, let's bend both the knees. दोनों घुटनों को मोड़िए और gently lift your left knee up. Your left foot is still on the right foot. बाएं घुटनों को ऊपर उठाएं और बाएं पांव को दाएं पांव के ऊपर रखिए. And slowly bring the leg down. धीरे धीरे पैर को नीचे करिए. अभी घुटनों को दोनों को एक के ऊपर दूसरों को स्क्वीज करिए. Push your left knee over to the right. You'll feel a little contraction in the groin region. Once again. Left leg up and down. Squeeze the inner thighs. जंघा को टाइट करिए. Up, down. Up, down. Up, down. Push. Up, down. Push. 10 times totally. And let's change the side. दूसरा दिशा में लेट जाएं. Once again, let's repeat this. This time, right knee up and down. Push. इस बार दाएं घुटनों को ऊपर करिए और नीचे दबाएं. Up, down. Relax and enjoy the movement. Up, down. 10 times. Up, down. Squeeze, 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 squeeze. Up, down. Up, down. Up, down. Continue. And relax. Now slowly roll over to your back. पीठ की बल लेट जाएं. Now bend both the knees and keep the feet together. दोनों घुटनों को मोड़िए और दोनों पाँव को जमीन पे रखिए पास पास. हाथ को साइड में लेके जाएं. Now let's drop your knees to the sides. And once again, bring the knees closer. दोनों घुटनों को साइड में छोड़िए और वापस सेंटर में लेके आए. Continue 10 times. Four, 5,
6, 7, 8, 9 and 10. Now drop both your knees to the sides, keep your hands on the inner thighs and stay here for at least 30 seconds. दोनों घुटनों को साइड में छोड़िए और हाथ को जंघा के ऊपर रखिए और यहाँ 30 सेकंड तक ऐसा ही विश्राम में लेटे रहेंगे. This gives a nice stretch to the groin region, to the prostrate also. और धीरे धीरे पैर को ऊपर लेके आए. पैर को सीधा करिए. Straighten the legs. Now bend your right knee, wrap your arms around the legs, pull your right thigh into your tummy, push your left knee down and stay here. दाएं घुटनों को मोड़िए, अंदर खींचिए दाएं पैर को और बाएं घुटनों को नीचे दबाएं. यहाँ पकड़ के रखिए. होल्ड हियर. You don't have to pull too much inside, just a little bit. And stretch your right leg out. Now, if you don't want to use a pillow, you can do this without a pillow. बिना तकिया के साथ भी आप कर सकते हैं. The other leg. Feel the contraction in the prostrate region or groin region. And let go. Now both the legs together. अभी दोनों पैर साथ साथ. पवन मुक्तासन. But you can squeeze your legs close to each other. And gently straighten the legs. Now lift both the legs up, hold the feet together with the hands and move the knees away from each other. दोनों पैर को ऊपर उठाएं, पैर को साथ साथ रखिए, हाथ से पैर को पकड़िए, घुटनों को दूर दूर लेके जाएं और पाँव को पेट की अंदर की तरफ खींचिए. Pull the legs in towards your navel region. Hold here. And let go. Now keep your knees bent, cross your right leg over to the left and squeeze your groin region little bit. हल्का सा दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखिए और हल्का सा पैर को थोड़ा टाइट पकड़िए. हाथ को साइड में रख सकते हैं आप. धीरे धीरे पैर को बाएं तरफ लेके जाएं. Twist your lower body towards the left side. And stay here for some time. इधर थोड़ा समय रुकिए. Again feel the contraction in the groin region, prostrate region. And gently bring the legs back up to the center. Now to the other side.
डू एज मच एज यू कैन, जितना हो सकता है उतना करिए। And come back to the center and change the legs. पैर को change करिए। Gently drop both your knees to the right side. Look to the left. दोनों घुटनों को दाएं तरफ छोड़िए और पकड़ के रखिए। Keep holding. And to the left. And come back to the center. Keep the legs down. Now keep the feet together and drop the knees to the sides. दोनों पाँव को साथ साथ रखिए और घुटनों को साइड में छोड़िए। Now keep your hands next to the body. Now gently lift your hips up, pressing the feet. Lift the hips up. पाँव को साथ साथ दबा के कमर को ऊपर उठाएं। होल्ड, रुकिए एंड डाउन, नीचे आ जाएं। घुटनों को दूर दूर ही रखिए। कीप योर नीज अवे, राइट, सो डोंट ब्रिंग देम क्लोजर। लिफ्ट, होल्ड, down. Remember, if you don't want the pillow, you can keep it to the side if you feel any discomfort in the neck region. Up, hold, down. You can do this anywhere from 5 to 10 times. Up, होल्ड 5 से 10 काउंट कर सकते हैं आप। डाउन, अप, होल्ड, कीप ब्रीदिंग, श्वास को रुकिए मत। डाउन, अप, होल्ड, and down. Relax, stretch your legs out. पैर को सीधा करिए। Now, for the last exercise, bring a small cushion. आखिरी एक्सरसाइज के लिए एक छोटा सा कुशन लेके आए। Now let's bend the knees once again. दोनों घुटनों को वापस मोड़िए। पैर को थोड़ा पास पास रखिए। Keep your feet close to each other. Now, take a pillow or a cushion. Put them in between the knees and thighs. घुटनों और जंघा के बीच में रखिए। Now gently squeeze the pillow. धीरे धीरे पिलो को टाइट पकड़िए। Hold here. Keep holding. And release. विश्राम, ढीला छोड़िए। एक और बार। Squeeze. Now remember, if you feel a little bit of congestion or a little bit of difficulty in the groin region, move the legs a little wider. अगर थोड़ा आपको groin region में इसमें थोड़ा discomfort लग रहा है, आप पैर को थोड़ा दूर रखिए। Tight squeeze, release. या पिलो को थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं। You can keep the pillow little higher also. Squeeze, hold, release. Squeeze, hold. You can do this again 10 to 15 times also. Release. Squeeze, hold. Release. Squeeze, hold. And release.
let go, stretch your legs out and close your eyes and relax for a while. पैर को सीधा करिए, आंखें बंद करिए और थोड़ा समय विश्राम करिए. ओम शांति शांति शांति. How did you like the practice? Let me know in the comment section. इस अभ्यास कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं. You know, when men grow over age of 40 because of hormonal changes or diabetes or obesity or even genetics, there could be a lot of issues that can happen with prostate. 50 उम्र की बाद डायबिटीज़, ओबिसिटी, जेनेटिक्स या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पुरुष लोगों का प्रोस्टेट में इश्यूज होना नॉर्मल है. तो इसलिए रोज़ योग अभ्यास करिए और उस अभ्यास में इस सारा आसन्स को भी इंक्लूड करिए. और एक स्पेशल डाइट भी मेंटेन करना उचित होगा. मेंटेनिंग ए गुड diet very specific for your prostate health will also help you. Make sure to like this video and share this video with your friends and family, and do subscribe to this channel. I also teach daily Sri Yoga online on YouTube. You can join my daily classes with the link given below in the description. That will help you to improve your overall health. मैं रोज श्री योग YouTube में ऑनलाइन में सिखाता हूँ. आप उस क्लासेस में भी जोड़ के अपना स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं. उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है.